Bismillahirrahmanirrahim. Good evening, dear brother and sister. How are you today? Just fine. I hope all of the viewers will be happy, healthy, and they will be busy in their activities. Dear viewers, today we are going to begin the fourth tense, that is present continuous tense. Before that, we discussed the indefinite tenses. Three indefinite tenses were there: present indefinite, past indefinite, and future indefinite. All these are there on the channel. We have discussed them in detail. Today we will begin the continuous tense or progressive tense. Continuous means jari, progressive jo jari ho. But I would like to say one thing, that dear viewers, try to watch the tense from the beginning to the end, because tenses are the basis of any language for the non-native speaker. So this is the basis, so we should try to watch it from the beginning to the end and watch it 2-3 times to learn them, because it helps a lot in improving the English language. So today we will begin, dear viewers and listener, the which tense? Present continuous tense or present progressive tense. Some people call it present continuous tense, some people call it present progressive tense. Continue और progressive दोनों का माना जारी है. What does it mean? जारी मतलब पहले हाल जारी, present है, so present continuous पहले हाल जारी. Inshallah after that we will begin past continuous, पहले माजी जारी, and then we will begin future continuous, mean पहले मुस्तकबल जारी. So continuous are also 3 tenses and indefinite were also 3 tenses. So today our tense is present continuous tense or present progressive tense, the meaning of which is पहले हाल जारी. From the meaning, the use is clear that ऐसा पहल, ऐसा काम जो हाल में, मौजूदा दौर में या मौजूदा टाइम में जारी हो. जब हम ऐसे बात कर रहे हैं, so we use present continuous tense. What's the identification in Urdu sentences? Good. Excellent. रहा है, रही है, रहे हो, रहे हैं, etc. When these words come in the end of the Urdu sentences and we want to translate such sentence into English, so we should come to know that the tense is present continuous tense, and we should apply the rules regulation of present continuous tense over here for such sentences. Or when we are speaking Urdu as well, so when raha hai, rahi hai come in a sentence, it means we are doing the activity right now. One dear viewer, ta hai, ti hai, ता है, ती है, सो ता है, ती है आदतन कामों के लिए इस्तेमाल होता था. हमने डिस्कस किया है. फॉर एग्जांपल हम कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि अभी तो हम ये लैंग्वेज क्लास ले रहे हैं, टेंस कर रहे हैं, लेकिन आदतन सुबह के वक्त या शाम के वक्त या दोपहर के वक्त एक टाइम पर करते हैं. या ऐसा है कि परस करे कोई आदमी सऊदी अरब में है और उनसे एक दूसरा दोस्त पूछ ले कि आपका बेटा क्या करता है, तो वो कहता है वो स्कूल जाता है. और शाम का वक्त हो तो शाम के वक्त तो आमतौर पर लोग स्कूल नहीं जाते हैं, लेकिन आदतन उसका काम यही होता है कि स्कूल जाता है. और स्कूल जा रहा है जब आ जाए रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अभी रवा दवा है स्कूल की तरफ. I mean the activity is continuous. So we use this tense for what kind of action, dear viewers? Right now mean अभी. ऐसे काम जो अभी जारी हो, जब कोई आदमी बात करते हो तो बात करते वक्त जब कोई काम जारी हो, we use present continuous tense. Number 1, ऐसे काम जो अभी जारी हो. 95% we use this tense for such activities, or more than 95%. The basic use of this tense is अभी जारी activities के लिए. The second use, action or activities which are in progress but temporarily stop. ऐसे काम जो या ऐसे सरगर्मियाँ which are in progress जो जारी हो but temporarily stop, लेकिन आर्जी तौर पर स्टॉप हो गए हो. पर इसका एक आदमी घर बनाता है, उसने घर पर काम शुरू किया है और काम करता है. So we ask you, what are you doing?
बिल्डिंग अ हाउस, आई एम मेकिंग अ हाउस, लेकिन शाम का वक्त है तो शाम के वक्त पर लोग कोई घर में काम नहीं करते, वो तो छुट्टी हो चुकी होती है इसी वक्त। या अगर कोई आदमी इम्तिहान दे रहा है, व्हाट आर यू डूइंग, आई एम टेकिंग एग्ज़ाम, लेकिन पेपर हो चुकी है और दोपहर का वक्त है या पेपर में 2-3 दिन का गैप है, लेकिन टेम्परेरीली या अर्जी तौर पर ये एक्टिविटी स्टॉप हुई है लेकिन मजमूई तौर पर जारी हो, तो ऐसे एक्टिविटीज़ के लिए भी वी यूज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। द थर्ड यूज ऑफ दिस टेंस इज व्हाट, पर परसिस्टेंट हैबिट with the adverb always, एडवर्ब या मुताल्लिक़ फ़ेल। एडवर्ब इंशाल्लाह वी विल डिस्कस इट इन डिटेल। एडवर्ब ये भी एक पार्ट ऑफ स्पीच है, मुताल्लिक़ फ़ेल इसे कहते हैं। जब एडवर्ब मुताल्लिक़ फ़ेल ऑलवेज़ हमेशा वाला लफ्ज़ इसके साथ इस्तेमाल हो जाए प्रेजेंट कंटिन्यूस के साथ, तो ये एक आदत शो करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही इज़ ऑलवेज़ एक्सक्यूजिंग, वो हमेशा बहाने कर रहे हैं, माजरत कर रहे हैं आप डूइंग द वर्क। ही इज़ ऑलवेज टेलिंग अ लाई, वो हमेशा झूठ बोल रही है, मीन उसकी आदत यही है। तो कभी कभार ऐसे के लिए मतलब परसिस्टेंट हैबिट के लिए, मुस्तकिल आदत के लिए भी विद द एडवर्ब ऑलवेज, जब हम ऑलवेज या हमेशा वाला एडवर्ब यूज़ कर लें। ऑलवेज इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड इट शोज 100% रिपीटिशन ऑफ एन एक्शन। इंशाल्लाह वी विल डिस्कस दिस इन लेवल 2 in detail. Similarly, the fourth use of this tense is what? For future activities with the future time expression, यानी पहले हाल जारी हम मुस्तक़बल के एक्टिविटीज़ के लिए भी इस्तेमाल करते हैं जब हम फ्यूचर टाइम एक्सप्रेशन यूज़ कर ले। फ्यूचर टाइम एक्सप्रेशन ये है कि लफ्ज़ टमारो मतलब कल वाला लफ्ज़, द डे आफ्टर टमारो, आई मीन तरसू, कल के बाद जो परसों है, परसों वाला लफ्ज़ इस्तेमाल करें। या अगर हम नेक्स्ट मंथ अगले महीना इसके साथ यूज़ कर ले, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक, तो दीज आर फ्यूचर टाइम एक्सप्रेशन। टमारो, द डे आफ्टर टमारो, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, एट 6 o'clock मीन आने वाले 6 बजे। सो पर दिस टेंस वी यूज़ फॉर सच एक्टिविटी, पर फ्यूचर एक्शन और एक्टिविटीज एज वेल व्हेन वी यूज़ द फ्यूचर टाइम एक्सप्रेशन विद इट। So I hope you will have learned the 4 uses of this tense, but the main use of this tense is action continue right now. जब अभी कोई काम जारी हो तो we use this tense. Now we are coming, dear viewers, to the structure or positive structure of this tense. In this tense, positive structure, first of all we use what? Subject. Subject mean फाइल, काम करने वाला फाइल। देन वी यूज़ बी, ऑक्सिलरी वर्ब बी, इमदादी फेल बी यूज़ करते हैं। द बी रिलेटिव, देयर आर 3 रिलेटिव्स ऑफ बी। बी के 3 रिलेटिव्स है या 3 छोटे छोटे फॉर्म है, वो कौन कौन से हैं? एज, आर, एम। कभी कभार हम बी की जगह एज लगाते हैं, कभी आर लगाते हैं, कभी एम लगाते हैं कंटिन्यूस टेंस में। And after that we use present participle. What we use? Present participle. Present participle mean verb first form plus ing. That is called present. And then we use rest of the sentence. बाक़ीमानदा जुमला. Rest of the sentence mean बाक़ीमानदा जुमला। अभी ये है क्वेश्चन कि हम एस कब लगाएंगे, आर कब लगाएंगे और एम कब लगाएंगे। सो इसके लिए ब्रदर एंड सिस्टर, व्हेन द सब्जेक्ट, एस मीन सब्जेक्ट, व्हेन द सब्जेक्ट आर सिंगुलर नाउन, व्हाट? सिंगुलर नाउन। फॉर एग्जांपल बिलाल, अहमद, सलीम, कोई नाम हो, राइट? और ही हो, शी हो, एट हो, एट बेजान के लिए इस्तेमाल होती है। तो फिर ऑक्सिलरी वर्ब क्या लगाएंगे हम? एज लगाएंगे, और एज के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। लेकिन वी विल ट्राई टू यूज़ द कंट्रैक्शन फॉर्म ऑफ दैट। व्हाट? कंट्रैक्शन फॉर्म। फॉर एग्जांपल, बिलाल क्रिकेट खेल रहा है, गुड, बिलाल इज प्लेइंग क्रिकेट। The native speaker don't say Bilal is playing cricket, but they say Bilal is playing cricket. या अगर हम कहें वो किताब पढ़ रहा है, गुड, he is reading a book, he is reading a book. मेरी माँ खाना पका रही है,
Good. My mother is cooking the meal. My mother's cooking the meal. Native speaker say in this way. अगर हम कहें कि वो दरिया में तैर रहा है. Good. He is swimming in the river. He is swimming in the river. अभी तैर रहा है. या मैकेनिक गाड़ी को ठीक कर रहा है. गॉड द मैकेनिक्स फिक्सिंग द कार. अक्सर हम ये बोलते हैं डियर व्यूअर्स के अहली ज़ुबान जो है, जो उनकी मदर है, वो ऑक्सिलरी और वो ग्रामर का ख्याल नहीं रखते हैं, वो वैसे ही बग़ैर ग्रामर वाले इंग्लिश बोलते हैं. लेकिन ये ज़रा हमारा गलत परसेप्शन है. हम कहते हैं कि वो है और एज़र एम वगैरह इस्तेमाल नहीं करते. असल में वो इस्तेमाल कर रहे हैं, बट दे आर यूजिंग कंट्रैक्शन फॉर्म. फॉर एग्जांपल ही इज़ फिक्सिंग द कार. So we think that the is not pronounced. He is fixing the car. We say is, वो नहीं कहते हैं. या they say I have taken the tea. I have taken the tea. So I have taken the tea. have का जो contraction form है, I have taken the tea. So they use it, but they use the contraction form and the contraction form in such a way that is usually not audible. Right? In every language we use the contraction form. Speaking every language we use the contraction form. So particularly in the English also the native speaker use the contraction form, and then we non-native speaker usually think that the native speaker don't use the auxiliary verb have and as or am etc. They are using the contraction form. Similarly dear viewers, अगर subject या file plural noun हो, फी मीन plural, n मीन noun. प्लूरल नाउन हो, यू हो, वी हो, दे हो, तो फिर ऑक्सिलरी वर्ब क्या इस्तेमाल होगा? ये आर इधर इस्तेमाल होगा, आर इस्तेमाल होगा. और वर्ब आई एन जी प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. और आर का कंट्रैक्शन फॉर्म क्या लगाएंगे? ये आया आ, जैसे हम आ कहते हैं. फॉर एग्जांपल खालिद एंड सलीम चाय पी रहे हैं. गुड. खालिद एंड सलीम आर टेकिंग टी शॉर्ट. या मेरी बहनें कपड़े धो रही है. माई सिस्टर्स. गुड, वेरी गुड. माई सिस्टर्स आर वॉशिंग द क्लोथ्स, आर डूइंग द लॉन्ड्री आल्सो कपड़े धोना. हम खत लिख रहे हैं. वी आर राइटिंग अ लेटर. या तुम घर की सफाई कर रहे हो. गुड. यू आर क्लीनिंग द हाउस. यू आर क्लीनिंग द रूम. राइट. और सलीम और अरशद कंप्यूटर को ठीक कर रहे हैं. गुड. सलीम एंड अरशद आर फिक्सिंग द कंप्यूटर. गुड. एंड अगर हम कहें हम इंग्लिश बोल रहे हैं, we are speaking English. And when the dear viewer the subject is I, जब फाइल क्या हो? I हो. So फिर auxiliary verb क्या इस्तेमाल होता है? am. और am का contraction form only am we will say, and then present participle or ing form and then rest of the sentence. For example मैं पानी पी रहा हूँ. Good. I'm drinking water. मैं खाना खा रहा हूँ. Good. I'm eating the meal. Right. Similarly मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ. I'm making a diagram. And that is the question. Commonly when we meet anybody, so that is our common question, that what are you doing, or what's Bilal doing. Yeah, what is, so what's then anybody doing. What's Kashif doing? What's Khalid doing? What's your mother doing? What's your father doing? What's Ali doing? Right. और अगर plural हो तो what are. Yeah, then we use what are का contraction form. What are you doing? What are they doing? What are Bilal and Salim doing? What are we doing? So what are. So if I ask you, what's Bilal doing? He is playing cricket. Speak loudly. What's Kashif doing? He is reading. Good. What's Aisha doing? She is cooking the meal. Good. What are Salim and Bilal doing?
they are plural है, so good, they are swimming in the river, they are swimming in the river. What are the mechanics doing? Mechanics more than one. What are the mechanics doing? Good, they are fixing the car. What are Khalid and Anwar doing? They are going to school. Good. And what are you doing? We are taking English language class, more than one. So we are taking now tense class or English class. Yeah. What's your mother doing? Singular noun. Hey, what's your? Good. She's washing the dishes. बर्तन उनको धो रहे हैं. She is washing the dishes. What's Fatma doing? Good. She is writing an application. She is writing a message. She is writing an essay. She is writing a story. मीन इसी दौरान वो जारी है. And what's Bilal doing? Good. He is cleaning the parlor. बेटा क्या को साफ कर रहे हैं. Yeah. And what's Anwar doing? Good. He is fixing the car, the selling pen. Yeah. What are you doing? We are speaking English. So that is our common question. What am I doing? मैं क्या कर रहा हूँ? You are speaking English. Yeah, you are teaching present continuous tense or present progressive tense. You are teaching. So what's your mother doing? Good. She is drinking water. पानी पी रही है. She is contraction form. Yeah. And what are they doing? They are eating. Good. They are eating the meal. Good. And what are the what's the carpenter doing? Carpenter mean बड़ी या तरखान क्या कर रहा है? Good. He is making the furniture. He is making a table. So I hope you will have learned this positive structure of it. Try to practice upon it more and more. Now when we are talking about the negative structure, मनपी जुमलों का, so due to the shortage of time, dear viewers, we will discuss it quickly. It is easy. After be के साथ हम क्या लगाएंगे? Good. Be not. Be not. Good. Be not. So be not mean isn't. Is not के साथ क्या लगाएंगे? Isn't. O की जगह contraction form लगाएंगे. और are not के लिए क्या लगाएंगे? Aren't. Good. Aren't. Contraction form. Contraction form aren't लगाएंगे. और am not के साथ क्या लगाएंगे? Good. Aren't. And am not. Am और am के बाद फिर not लगाएंगे. Am not doing anything. For example, बिलाल क्रिकेट नहीं खेल रहा है. Good. Bilal isn't playing cricket. Is not, so isn't playing cricket. आयशा किताब नहीं पढ़ रही है. Good. Aisha isn't reading a book. मेरी माँ खाना नहीं पका रही है. Good. My mother isn't cooking the meal. She is taking rest. She is reciting the Holy Quran. जो भी दूसरा काम कर रहे हैं, so you can tell about that. Yeah. अहमद और सलीम swimming नहीं कर रहे हैं. Aren't swimming. Good. Aren't swimming. They are studying for the exam. Swimming नहीं कर रहे, exam के लिए studying कर रहे हैं. या हम बर्तन नहीं धो रहे हैं. हम इंग्लिश लैंग्वेज क्लास ले रहे हैं. Good. 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 We aren't. You will use the contraction form. We aren't washing the dishes. We are taking English language class or we are taking tense class. हम मजमून नहीं लिख रहे हैं. Composition नहीं लिख रहे हैं. Good. We aren't writing the composition. We are taking the class. और इसी तरह मैं पानी नहीं पी रहा हूँ. मैं स्कूल जा रहा हूँ. Good. I'm not. Good. I'm not drinking water. I'm going to school. Amn't is not there in English language. Am not के साथ contraction नहीं होते हैं. Am हम I के साथ contract करेंगे. Amn't is wrong. I'm not drinking water. I'm going to school. या मैं खाना नहीं खा रहा हूँ. मैं खत लिख रहा हूँ. I'm not eating. Good. Good.
I'm not eating the meal, I'm writing a letter. So I hope you will have learned the negative and positive structure of this tense. Try to write 20 positive sentences and 20 negative sentences to get more and more practice. I hope you will have learned this one. Now we will begin the interrogative structure. We will discuss the interrogative structure of this tense now. So when we are making the interrogative structure of any sentence in the past three tenses also, you learn, dear viewers and listener, that we use the auxiliary verb in the beginning. What in the beginning? Auxiliary verb. And then we use subject, and then we use verb, and then rest of the sentence. So in this present continuous or present progressive tense, the auxiliary verb are what? Is, are, and am. Good. So you will use these in the beginning, and we will use then subject according to the subject. According to the auxiliary verb. When the subject is what? He, she, it, or singular noun, we use is. And we use are in what situation? When the subjects are you, we, they, are a plural noun. Already we discussed in the positive sentences. And when the subject is I, so then we use am. फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि क्या बिलाल क्रिकेट खेल रहा है तो कैसा कहेंगे? गुड. इज बिलाल प्लेइंग क्रिकेट? यस ही इज. अगर कोई काम कर रहा हो तो यस में जवाब देंगे यस ही इज, को जो भी सब्जेक्ट हो. क्या आयशा क्रिकेट खेल रही है? गुड. नो शी इजंट. नो प्लस सब्जेक्ट प्लस इजंट. नो शी इजंट, शी इज टेकिंग टी. अभी वो चाय पी रही है, क्रिकेट नहीं खेल रही है. क्या अली और असलम के साथ तो आर इस्तेमाल कर लेंगे क्योंकि प्लूरल नाउन है. क्या अली और असद चाय पी रहे हैं तो क्या क्वेश्चन कैसे करेंगे? गुड. और अली एंड असद टेकिंग टी तो जवाब क्या होगा? नो दे आंट. गुड. दे आर स्टडिंग फॉर द एग्जाम. नो दे आंट, दे आर स्टडिंग फॉर द एग्जाम. क्या तुम इंग्लिश लैंग्वेज क्लास ले रहे हो? गुड. इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आर यू टेकिंग? गुड. आर यू टेकिंग इंग्लिश लैंग्वेज क्लास? सो येस वी आर. येस जमा के साथ फिर क्या लगाएंगे ब्रदर? येस और वी या जो भी हो आर, जब प्लूरल हो. और अगर मनफी हो सो नो प्लस सब्जेक्ट प्लस आंट. नो वी आंट. फॉर एग्जाम्पल आर यू टेकिंग टी? आर यू टेकिंग टी? नो वी आंट. We are taking English language class. Good. Are you taking tea? So no, we aren't. नहीं, हम चाय नहीं पी रहे हैं. We are taking English language class. We are. Then you will use contraction form. Similarly, अगर हम कहें कि क्या वो इंग्लिश सीख रहे हैं, सो क्वेश्चन कैसे करेंगे? अगर जमा हो, क्या वो इंग्लिश सीख रहे हैं? गुड. आर दे लर्निंग इंग्लिश? सो दे मेकिंग फर्नीचर मैंने लिखा है यहाँ, तो क्या जवाब देंगे? नो दे आंट. गुड. नो दे आंट, दे आर मेकिंग फर्नीचर. गुड. और ही है तो ही तो एस के साथ लगाएंगे. क्या वो टीवी देख रहा है? गुड. इज ही वॉचिंग द ड्रामा और वॉचिंग द टीवी? सो येस ही इज. हाँ, वो अभी देख रहा है, बैठा है और देख रहा है. और क्या वो टीवी देख रही है? गुड. इज शी वॉचिंग द ड्रामा और वॉचिंग द टीवी? तो जवाब क्या होगा? गुड. गुड. नो शी इजंट, शी इज टेकिंग रेस्ट. ये जवाब तो असल में इस एक्टिविटी का हिस्सा नहीं था, लेकिन जब हम क्वेश्चन करते हैं और येस नो क्वेश्चन हो तो येस नो क्वेश्चन हम किससे शुरू करेंगे? एज आर एम से. ऐसे काम के लिए जो अभी जारी हो. अक्सर हम ये कहते हैं कि कोई और इस्तेमाल करते हैं. सो वी शुड यूज़ फॉर कंटिन्यूस एक्टिविटीज़ एज आर एम इन द बिगिनिंग. एज बिलाल राइटिंग अ लेटर. आर यू टेकिंग इंग्लिश लैंग्वेज क्लास? और एज आर एम के बाद फिर आई एन जी फॉर्म लगाएंगे.
अक्सर हम वर्ब पास्ट फॉर्म सिर्फ लगाएंगे. वी से एज यू गो टू स्कूल, सो दैट इज रॉन्ग. एज यू गो टू स्कूल. डू यू गो टू स्कूल वी शुड से. या वी समटाइम वी से आर यू गो टू स्कूल, एज बिलाल गो टू स्कूल, सो दैट इज रॉन्ग. एज आर एम के बाद देन यू विल यूज ing फॉर्म बिकॉज कंटिन्यूस टेंस. And when you use verb past form, so you will use do or does, which already we have discussed. Does Bilal go to school? Do you go to school? Yeah. और जब हम मनपी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो मनपी सवालिया क्वेश्चन करते हैं तो वाहिद के लिए क्या लगाएंगे? एजेंट. और जमा के लिए ऑन्ट. और आई के लिए एम आई नॉट. गुड. फॉर एग्जाम्पल, क्या बिलाल क्रिकेट नहीं खेल रहा है? गुड. isn't बिलाल प्लेइंग क्रिकेट? सो येस ही इज, अगर वो खेल रहा है. और अगर नहीं तो नो ही isn't, ही स्टडिंग फॉर द एग्जाम. क्या आयशा कुरान मजीद की तिलावत नहीं कर रही है? गुड. isn't आयशा रिसाइटिंग द होली कुरान? अगर कर रही है तो क्या कहेंगे? येस शी इज. और अगर नहीं कर रही है? नो शी इजंट, शी इज क्लीनिंग द हाउस. इसी टाइम में वो घर की सफाई कर रहे हैं. और अगर जमा हो, क्या तुम इंग्लिश लैंग्वेज क्लास नहीं ले रहे हो? गुड. आंट यू टेकिंग इंग्लिश लैंग्वेज क्लास? तो हम तो ले रहे हैं, तो क्या जवाब देंगे? येस वी आर. हाँ हम ले रहे हैं, क्लास अभी मसरूफ़ है. और अगर क्या मैं ख़त नहीं लिख रहा हो तो कैसे लगाएंगे? एम आई नॉट. गुड. एम आई नॉट राइटिंग अ लेटर? क्योंकि एम एंड तो नहीं इस्तेमाल होते हैं, सो देन यू विल यूज़ दिस. एम आई नॉट राइटिंग अ लेटर? नो यू आंट, यू आर टेकिंग द क्लास. अभी तो आप ख़त नहीं लिख रहे हैं, अभी तो आप क्लास ले रहे हैं. यू आर टीचिंग टू द क्लास. राइट. सो क्वेश्चन मार्क हम इसी तरह क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन करते हैं. सो ब्रदर यू, इट विल बी योर होमवर्क दैट यू विल राइट 20 question sentences and 20 negative and question, interrogative and negative sentences. And when you are talking about WH or information question, so you will use brother and sister WH word in the beginning and this. And here also you will use the WH word in the beginning and then you will use this structure. For example, बिलाल क्या कर रहा है? Yeah, what's Bilal doing? You will try to use the contraction form, whose, what's, where's, where are, etc. What's Bilal क्या कर रहा है तो क्या कहेंगे? God. What's Bilal are doing? So he's playing cricket. What's Aisha doing? God, she is taking tea. What are है? So what are, ये WH word you will use in the beginning. What are Ali and Asad doing? Good, they are studying for the exam. What are you doing? We are taking Good. And what are we doing? गुड. वी आर लर्निंग इंग्लिश. हम, मैं भी और आप भी सब इसमें शामिल हैं. वी. एंड व्हाट आर दे डूइंग? गुड. दे आर मेकिंग फर्नीचर. एंड व्हाट्स ही है, सो व्हाट्स ही डूइंग? गुड. एंड व्हाट्स शी डूइंग? गुड. शी इज टेकिंग अ रेस्ट. गुड. So we will use in that. Similarly, if we ask where's Bilal going, so he is going to Peshawar. When is he going to Peshawar? So he is going to Peshawar at 9 o'clock. Why is he going to Peshawar? So he is going to Peshawar to take admission in the Islamia College, or he has an appointment. So we can use any, when, what, where, why, any kind of WH question we can use in the beginning, and then according to the subject we should use as, are, or am. If the subject are singular, so then we should use what's, when's, where's, why's, etc. If the subject are plural, so then we should say what are, where are, when are, why are. Why are they going to Peshawar? Why are you taking tea? Why are you playing cricket? Right? According to the subject. और अगर मनपी सवालिया question हो और WHB हो तो we can use that structure. Yeah.
we can use this structure also, but this structure is very rare in English language. The native speaker usually don't use this structure a lot. So I hope you will have learned the present continuous tense. Try to read it more and more, and try to learn it as well as possible, because in our day-to-day activities we use the present continuous tense in most of the activity. That is our common question: what are you doing, what's Bilal doing, right? और अगर यही स्ट्रक्चर, सो व्हाट आर्ट यू डूइंग टमारो, तुम कल क्या नहीं कर रहे हो, बट एज आई टोल्ड यू दिस स्ट्रक्चर इज वेरी रेयर इन द English language. Thank you so much for watching the video, dear viewers and listener. Try to subscribe the channel and share it with your near and dear one as well. Thanks a lot.